Okay, our today's topic is in the continuation of the last topic. It's a int data type. Okay, int data type. And one thing is here, it is generally known as integral. Integral or sometime known as whole numbers, right? Means a number which do not have any decimal point. Okay, for example, just we have 901234 है ना, something 786 something like this. Okay, and you know in Python we can represent है ना, we can represent integer data type या integer numbers इन 4 ways है ना, 4 तरीके से हम इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, एंड द सेकेंड वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज ऑक्टेल number system, and the fourth one is hexadecimal number system. ठीक है, ये 4 तरीके से हम इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाइथन में. ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेसिमल नंबर सिस्टम, दिस इज द डिफॉल्ट नंबर सिस्टम, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ना, मोस्ट कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम. which one is decimal number system. Okay, and you know that inside the decimal number system the base is 10. Okay, and allowed number from 0 to 9, you know that. Okay, 0 to 9. And if I'm talking about binary number system, so the base is to allowed values कौन सी है, 0 and 0, 1. If I am talking about octal number system, तो base है इसका 8 and allowed values is 0 to 7. And if I am talking about hexadecimal, तो base है इसका 16, allowed values are 0 to F, where 0 to 9 and for A is 10, B equal to 11, C means 12, D means 13, E means 14 and F means 15. तो ये ABCD यानी कि एक जो 10 है, 10 के लिए कांस्टेंट कैरेक्टर है A, 11 के लिए कांस्टेंट कैरेक्टर है B, 12 के लिए C, D, E, F है ना. एंड आई एम राइटिंग इन द स्मॉल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन द कैपिटल A, B, C. वैसे तो बच्चों जो हमारा पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ वन ऑफ दिस केस, तो यहाँ पर आप स्मॉल या कैपिटल जो ABCD है हेक्साडेसिमल के फॉर्म में आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पर यूज कर सकते हैं. आप स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, आप कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन द पाइथन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, तो एनी वैल्यू, इफ आई एम टेकिंग ए वेरिएबल, एनी वैल्यू राइट, बट इंक्लूडिंग only digits 0 to 9 is internally or can be called a decimal number system. Okay, या decimal number. If I'm talking about how can we represent a binary value in Python. Okay,
तो बाइनरी वैल्यू इफ आई एम असाइनिंग बच्चों 111 it can be considered as a binary? No, it cannot be considered as a binary. It always considered as a decimal. So how can we represent a binary? So before a number, if we use 0b small b, okay, sorry, it's a 0b small b, or either I can use 0 capital B. So any number combination of 0 or 1, this internally treated as a binary value. How can we use a binary value inside the Python? Just applying the prefix 0b small b or either capital B, we can represent the binary value. Okay, if I'm talking about octal, ठीक है, तो octal के लिए अगर मैं बात करूं तो octal को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, आई हैव सम वेरिएबल, ओके, ए, तो इफ आई एम राइटिंग 176, दिस इज octal नंबर. सर, ऑल वैल्यूज आर in the 0 to 7, okay, but is it called the octal number? No, this is treated as a decimal. How can we tell the compiler, how can we tell the Python virtual machine PVM कि भाई ये जो मैं इनपुट कर रहा हूं ये एक ऑक्टेल नंबर है? ये कैसे बताएंगे? तो उससे पहले बच्चों यहां पर प्रीफिक्स हमें लगाना है, वो है 0 O, either small or either you can use capital. I can use 0 capital O and I am using 1 2 3 4 5, ठीक है, ऑक्टेल नंबर. Let's suppose if I am using 0 O capital small, no problem at all, and I am using 1 2 6 7. So this statement will generate a compile time error because 8 is not a valid digit for the octal number system. Is it clear? 8 is not a valid digit for the octal number system. Now one thing is here, if I'm talking about a hexadecimal number system, then what about the hexadecimal? Hexadecimal. So to represent a hexadecimal number system, we use a prefix. That prefix is 00x, either small or either capital. I can write 1 2 3 4. Now 1 2 3, this number due to this prefix considered internally as a hexadecimal number. Let's suppose one thing, b equal to 0 capital X and I am using 6 7 8 A. Internally this will treat it as a hexadecimal number. Okay, so how can we represent hexadecimal number? By applying a prefix before the number 0x. How can we represent a octal number system? 0O, prefix by 0, capital small, no matter at all. How can we represent a binary number? 0B. And there is no such type of prefix for the decimal because all the numbers 0 to 9 digit by default treated as a decimal number system in the Python. Okay, so there are the 4 ways we can represent a integer number, but the most commonly used which we use in the Python, that is what? Decimal number system. Okay, how can we show this? Let me show you one Python code. Okay, I'm opening my Python IDLE and it's taking few time. Yeah, just done. Okay, so I'm taking one number. Let me suppose I'm taking a equal to 0b100. Okay, you know this 100, ये जो 100 ये किसका बाइनरी है बच्चों? ये होता है 4 का बाइनरी. Now one thing is here, आप पाइथन के अंदर आप किसी भी बेस का मतलब है आप बाइनरी में इनपुट कीजिए, आप ऑक्टेल में इनपुट कीजिए, आप हेक्साडेसिमल में इनपुट कीजिए, आपको रिटर्न जो मिलेगा वो हमेशा मिलेगा बच्चों डेसिमल नंबर सिस्टम में. आपको जो रिटर्न मिलेगा वो हमेशा किस में मिलेगा? डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर. ठीक है, देखिए जैसे मैं इनपुट करूंगा, अभी मैंने बताया कि 100 इट इज इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट फॉर 4 डिजिट, सो इट विल रिटर्न मी 4. ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है? ये ए की वैल्यू में प्रिंट कर रहा है 4. लेट मी सपोज आई एम यूजिंग 0 capital B and I'm using 1010. This 1010, the binary equivalent for 10.
so it will return if I'm printing a 10. ठीक है. Now next we have inputting. Now I'm inputting 0 0 small o and I'm inputting 12. If I'm inputting 12 and I will check the decimal value, it is equivalent to 10. यानी कि ऑक्टेल में अगर हम 12 इनपुट करेंगे तो वो डेसिमल के 10 के इक्वलेंट होगा. ठीक है. If I'm talking about 0x f, f का मतलब क्या है? f का मतलब है 15. So it will return okay, I use o, sorry, 0x f. It will return what? If I'm printing the value of a 15. Okay. If I'm returning a equal to 0x and I'm inputting a, it will return 10. It will return 10 because the equivalent of a, that means 10. अच्छा, एक चीज हो रहा है, अगर मैं कैपिटल ए यूज करूं या कैपिटल बी यूज करूं तो इन दैट के सॉरी अगेन a 0x कैपिटल b, so it will return what? 11. क्यों? क्योंकि b जो हेक्साडेसिमल है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 11. ओके, अभी मैंने आपको डिस्कस किया. सो एनी नंबर इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट बाइनरी, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल, I can represent, no problem at all. But the output always written in the decimal form. ठीक है, because the default number system is a decimal. Now one thing is here, if I am taking a decimal number system, it will return me a decimal value, no problem at all. ठीक? Now one thing, okay, in the 11th class you have learned about it. Sir, my requirement is I want to change any decimal, okay, any decimal or either any other base. Any other base का मतलब decimal, octal and hexa, decimal, decimal. I want to convert into the binary. Sir, is it possible or not? Or sir, I want to convert octal hexa, नहीं, binary and decimal into the octal. Is it possible or not? Definitely possible. Actually Python provide 3 function for this conversion. Okay, we learn about a 3 function, which is the inbuilt function. One is the bin for binary, one is OCT, oct for octal, and one is hexa, that is for hexadecimal. It means what? If I want to convert decimal, octal or hexa into the binary, I can use this bin function. ठीक है. At the same way, if I want to convert any base, यानी कि hexa, decimal, binary into the octal. Yeah, this is also possible by using the oct function. And in case of the hexa, if I want to convert any decimal, binary, octal, yes, happily possible. We can use these inbuilt function and convert one base to the n particular type of base. Okay, and how can we use this? Let me show you. I just close this and open this again, so we can see clear Python file, Python cell. Okay, so I'm using bin, any number. You know what I'm telling you? If what is the binary? Sorry, what is the binary value of 4? What is the binary value of 4? 100. So it will return me 0B100. Sir, what is the binary value for 10? What is the binary value for 10? Yes, 0B1010. It is the binary value for 10. Sir, I want to convert some octal value. So how can I pass 0 0 0 0 1 2 3? I want to convert in the binary, happily possible, for the 1 2 3 octal number equivalent to this number. Okay, sir, I want to convert hexa. So how can you pass 0x f? And you know what is the equivalent of f? F is the 15, and what is the equivalent in the binary? It's a 1111, and is happily working. Okay, now one thing is here, sir,
can I use octal number system? Can I convert other base to the octal number system? Happily possible. So I am passing here 12. I am passing here 12. So what will be the output? The output will be 40, because 12 is a decimal number. I am not using any prefix. That means 12 is a decimal number, and 12 का decimal number 12 का equivalent octet number क्या है? 14. Sir, I want to use oct. I want to use oct, and I am passing here. I am passing here 0b 111. ठीक है. So can you tell me what is the octal number of this? This is the 7. ठीक है, 111 for the 7. And I want to convert 0x A B C D. I want to convert D. So okay, I am using not 0, I am using OX. So I need to use 0x D. Okay, I use 0x D. It will convert 0 15. Okay, this is the equivalent for octet. And if I am talking about any hexa, and I want to convert any decimal number, I want to convert 10. It will return A. Something is mistake. Hex, HEX maybe, yeah. And yeah, it's a hex, not hexa. It is hex. Sorry, by mistake. It is not hex. It is hex. HEX only, not hexa. This is HEX only. Just wait. I remove this. Just wait. This is hex only, not hexa. This is hex only. Okay, fine. So I'm using तो 10 रिटर्न किया. आई एम यूजिंग हेक्स 0x x and I am using f. You know it will return 50. ओके, ये तो हमारा वैसे ही है. मुझे यहाँ पर HEX और मुझे यहाँ पर देना चाहिए था 0x15 ओनली, एंड इट विल रिटर्न f. ठीक है. And one thing is here, sir, can I convert any octal number into the hex? Can I convert any binary number? Definitely you can. I am returning 0B1010. It will return what? It will return बच्चों, it will return A. क्यों? क्योंकि मैंने दिया है 10 की बाइनरी और ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? 0x A. I can use x and I am using 0O 1 2 3 4. So it will return into the hexa and the output value is 0x29C. You can check the what is the value of 2934 and all. Okay. So these three inbuilt function we have: bin, oct and hex, HEX. And one thing is here, sir, why not provide it for the decimal? देखिए डेसिमल के लिए कोई फंक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप किसी भी बेस में इनपुट करो बाय डिफॉल्ट वो किस में रिटर्न करेगा? हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें रिटर्न करेगा. ओके. एंड वन थिंग इज हियर, लेट्स सपोज आई एम यूजिंग a इक्वल टू 0b एंड 1 2 3 4, एंड यू नो दैट बाइनरी के अंदर 2 डिजिट एप्लीकेबल नहीं है. सो इट इज व्हाट? इनवैलिड डिजिट 2 इन द बाइनरी लिटरल. क्या मैसेज दिया उसने? क्लियर मैसेज है कि इनवैलिड डिजिट 2 इन द बाइनरी लिटरल. लिटरल का मतलब बच्चों होता है कांस्टेंट, कि बाइनरी कांस्टेंट के अंदर 2 इज नॉट ए वैलिड वैल्यू. लेट्स सपोज आई एम यूजिंग A0O, आई एम यूजिंग 1 2 6 7 8, एंड इन दैट केस it will return what? Invalid digit 8 in octal literal. And if I am using A equal to 0x and ARUN, A is the valid और A B C D E है, तो मैं यूज रहा हूँ यहाँ पे beer. R is not a valid. ठीक है. 0x R is not a valid. In that case it will return syntax error, because B is a valid, E is a valid, but R is not a valid value, so it will return invalid syntax. Is it clear? So it is complete